Due to better storage problem, so let me continue with this question. That is we have to first letter can be placed into any one of the 5 envelopes in a 5 different way. 4 letters can be placed in remaining 4 envelopes in 4 different ways, similarly 3 ways, similarly 2 ways, similarly 1. So it can be arranged way. So this could be therefore the total arrangement it will be the 5, then 4, then 3, then 2 into 1. 5 4 the 20, 23 the 60, 62 the 120. In 120 ways we can post 5 different letters in a 5 envelopes. Okay. Now come to the question number, third part of this one. Third part is 6 books of a different subjects arranged in a shelf. ठीक है. Sixth part is this. Question number C. 6 books can be arranged among themselves in a 6 factorial way. 6 बुक्स आहे तर बघा हे 6 बुक्स आहे. बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5, बुक 6. बुक 1 बुक यहाँ पे भी रह सकती है, यहाँ 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 पे रह सकती है. तो बुक वे कितने वे में अरेंजमेंट हो गई. सो फर्स्ट बुक कैन बी अरेंज इन अ 6 वेज. ठीक है. सपोज एक पोजीशन इज फिक्स फॉर द बुक 1, सो रिमेनिंग इज 5 पोजीशन, रिमेनिंग इज 4 पोजीशन, देन 3 पोजीशन, देन 2 पोजीशन, देन 1 पोजीशन. सो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विल बी जस्ट 6 5 30, 30 4 120, 120 6 720 वेज. बराबर. सो इट कुड बी अरेंज इन अ 720 वेज. ठीक है. नाउ द फोर्थ पार्ट इज योर डी. D is given to you. 3 tickets are drawn from a box containing 20 C3s. देखो selection करना है. So what I told you about the selection is combination. So what we have to do the collection, that is 20 C3. So 20, there are total 20 lottery tickets are there. So we have to select the 3 of them. So 3 tickets can be drawn from 20 or 20 C3 ways. ठीक है. Now you know very well how to calculate the combination. 20 C3 ways कैसे निकालेंगे. So n of s is equal to 20 into 20 C3, 20 into 19 into 18 upon 3 into 2 into 1. So 6 3s are 18. I am getting here ns is equal to 20 into 19 into 3. So number of sample space is, what is the number of sample space? That is 1 1 19 2s are 388, 388 3 8s are 24 0 4 3. ठीक है. सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आर 1140 वेज. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज योर. थर्ड क्वेश्चन इज ओवर. लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5th. So question number, I am taking alternate sums. So question number 5th is that 2 cards are drawn marked as 5 6 7 8. Means cards, अपने पास में कार्ड है जिसमें नंबर लिखे हुए हैं. दे आर रिटन सम नंबर्स ऑन इट, दैट इज दे हैव रिटन द 5 6 7 8 एंड वी हैव टू ड्रॉ द कार्ड्स फ्रॉम दिस रिटन नंबर कार्ड 5 6 7 8. So first condition is that with replacement meaning what, कि suppose I have taken the 5 number card from that bunch, तो उसको मैंने फिर से अंदर डाल दिया. यानी कि सपोज मैंने पहिला 5 निकाला तर दुसरा आने के भी चान्सेस होऊ शकते ना. 5 बघा पहिला मी 5 काढला, आता हा 5 काढल्यानंतर मी परत 5 त्याच्यामध्ये टाकून दिलेला आहे. म्हणजे दुसरा जेव्हा मी सिलेक्ट करणार तर 5 येऊ शकतो ना. सो विथ रिप्लेसमेंट येण्याचे चान्सेस किती आहे. 5 5 होऊ शकतो. पहिले मी 5 काढला, परत 5 त्याच्यामध्ये टाकलं, म्हणजे 5 5 येऊ शकतो. 5 6 येऊ शकतो. 5 7 5 8. सिमिलरली विथ द केस ऑफ 6 मी बाहेर काढला आहे, ते 6 6 पण येऊ शकतात. 6 5 6 7 6 8.
Similarly 7 5, 7 6, 7 7, 7 8. ठीक है. Similarly you can do with the 8. So how many sample space will be there? Total sample space will be the 4 3s are 12. Yes, 12 will be there. So 8 5, 8 6, 8 7, 8 8. ठीक है. So are you getting the with replacement how to do this one? Now question number second part, without replacement. Without replacement. So how to do the without replacement? अच्छा, रिप्लेस मैंने 5 निकाला. सपोज आई हैव टेकन आउट द 5. नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट कीपिंग 5 अगेन इन दैट बंच. 5 मेरा बाहर निकल के आ गया है, तो आई हैव नो चांसेस ऑफ गेटिंग द 5 अगेन. सो आई कैन गेट द 6 5 7 5 8. सिमिलरली विद द 6 5 6 तो निकल चुका है. 7 6 8. आई होप आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन. 7 5, 7 6, 7 8, 8 5, 8 6, 8 7. So this is without replacement, this is with replacement. No, see, this is with replacement and this is without replacement. Are you getting the meaning difference between the with replacement and without replacement? Now come to the question number 7th. मी घाईत नाही, लवकर घेते, कारण आपल्याला हे फिनिश करायचंच आहे आज. तर 7वां सम आहे. लेट अस टेक इट फास्ट. हां. सो क्वेश्चन नंबर 7th इज 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that one is a face card and other is a ace card. Now 2 cards are drawn 10 sums. 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability one is a face card and other is a ace card. Now how many total cards are we do have? Total number of cards are, so 2 cards are, let me write, 2 cards are drawn from the pack of 52 cards. So what is the way for this one? 52 C2 बराबर है ना. So 52 C2 ways. How to calculate 52 C2? 52 into 51 upon 2 into 1. So which is 26 into 15. Let me keep it as it is. After that when we will take out its event, then it will be easy for calculation. Now first event is given to you. A event is given to you. One is face and other is an ace card. Face and ace card. How many face cards are? Face means king, queen and jack. So king, queen and jack. King, queen, jack हार्टचा आहे, डायमंडचा आहे, क्लबचे आहे आणि स्पेस काय बोलतात त्याला, स्पेडचे आहे. 4 आहे. तो 4 4 3s are 12. So one face card can be drawn from 12 face card in 12 C1 ways. ठीक है. and ace card, one ace म्हणजे इक्का card can be drawn from 4 ace card in 4 C1 ways. ठीक है. Therefore total ways are, and is there, so multiplication will be there. 12 C1 means 12, 4 C1 means 12 C1 and 4 C1. 12 C1 means 12 and 4 C1 means 4. So that is the event A.
So n of A is equal to 12 into 4. So this is, now we have to find the probability of event A. Probability is 12 into 4 upon Na upon, this is ns na, Na upon ns, that is 26 into 51. ठीक है. So let us calculate this one. डिवाइड तो होगा नहीं है, 2 से करके देखते हैं. 26 12 इंटू 4 इंटू 26 इंटू 51. 2 2 ज़ा 4, 2 13 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 13 1 ज़ा 13, 3 13 5 ज़ा 65, 65 प्लस 3 68, 24 अपॉन 681. ठीक है. हाँ, so after that you can cancel it more. 3 ने जाणार का 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21. Yes, 8 upon 221. 220 is cancelled. So this is the solution for your first part of your 5th question, 7th question. Now come to the B part. B part is one club and other is diamond. B part is that one is club and other is diamond. B part, one club and other is diamond. Now one club can be, club means what, student? This, maybe you are remembering or not, this is a club. How many cards are these? Clubs are 13. So let us give it name the B. Even one club can be drawn, one club can be drawn from 13 clubs. बराबर है ना. वन क्लब हमें कहाँ से निकालना है? 13 क्लब से निकालना है ना. फ्रॉम 13 क्लब्स इन 13 C1 ways. And similarly diamond. How many diamonds are there? Diamond is this one. Diamond is red card. We say chaukat. So diamond can be in the same way. From the 13 card will be in a 13 C1 ways. Therefore n of B, total ways. First of all we write the total ways are 13 into 13 ways. So n of B is equal to 13 into 13 ways. So we have to find the probability. So required probability is PB. PB is equal to Na upon Ns. ठीक है. Ns means Na is NB. Write down NB. That is 13 into 13, and we have to draw the 52 cards na. So total sample space is the 52C2. 52C2. So 52C2 will be 13 into 13, 52 into 51. 2 नीचे रहता है, ऊपर भेज देंगे इसको. 13 4 ज़ा 2 2 ज़ा 13 upon 102 is your answer. ठीक है. So this is your solution for the B part of your question number 7. Now the C part, both are from the same suit. Now C question, C part is
both are from the same suit. Now how many suits we have? We have the 4 suits. ठीक है, we have the 4 suits, that is heart, diamond, after that club and spade. Am I right, students? Heart means this is your heart, this is your diamond, and this is your club, this is your spade. These are the 4 cards. Now both are from the same suit. दोनों के दोनों सेम ही सूट से. These are said to be the 4 suit. The first condition that we have to first select the suit. So suit can be, how many suits we do have? We have the 4 suit. So one suit can be selected in from the one suit can be selected from 4 suits in 4C1 ways, which is equivalent to 4 only. ठीक है. Now second condition, both are from the same suit. So same suit, how many? इसमें कितने cards है? 13 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, 13 है. So 2 cards can be drawn. Therefore the second case is 2 cards can be 2 cards can be drawn from the selected. हमने जो select suit किया होगा उसमें से निकालेंगे 2 cards. Suit in 13C2 ways. बराबर है. Now you can see that 13C2 ways. Let us solve this one. Therefore 13C2 is equal to 13 into 12 upon 2 into 1, that is 13 6 78 ways. बराबर है, 78 ways. See, now what we are going to do, how to perform the event. एक सूट आपण एका सूटमधून काढलेला आहे, पण गरज नाही आहे ना, कारण हा पण सूट असू शकतो, हा पण सूट असू शकतो, याच्यातून पण घेऊ शकते. म्हणजे किती वे झाले माझ्याकडे? 4 वे झालेले. म्हणजे हा इव्हेंट माझ्याकडे एन ऑफ सी किती आलेला आहे? एन ऑफ सी इज 4 into 78 वेज. स्टुडंट्स गेटिंग ऑर नॉट? बघा, त्यांनी सांगितलेलं आहे मला 2 कार्ड्स काढायचे. तर 2 कार्ड्स मला कसे असले पाहिजे? दोन्ही पण सेम सूटचे असले पाहिजे. सेम सूटचे असले पाहिजे. तर माझ्याकडे किती सूट्स आहे? 4 सूट्स आहे. 1 2 3 4 आहे. आता हे 4 सूट्स आहे. पहिले तर माझी कंडिशन काय असली पाहिजे? मला सूट सिलेक्शन करायचं आहे. तर सूट सिलेक्शन माझ्याकडे 4 सूट्स आहे, त्याच्यातून मी एक सिलेक्ट केला 4 वेजनी. हा पण घेऊ शकते, हा पण घेऊ शकते, हा पण घेऊ शकते, हा पण घेऊ शकते. सो 4 वेज आलेले माझ्याकडे. नाव आता 4 सिलेक्शन सूट केल्यानंतर सपोज जो सूट सिलेक्ट केला आहे, मी हार्ट केला आहे तर त्याचा 78 वेजनी येणार, हा केला तर येणार, हा केला तर येणार. म्हणजे 4 आले का नाही? सो आय हॅव टू मल्टिप्लाय द गिवन रिझल्ट विथ द 4. सो नाव टोटल प्रोबॅबिलिटी विल बी द PC, that is probability is 4 into 78 upon 52C2. Shall I write? I directly 52 into 51 and 2. 26 into 51 I am writing it clearly. 26 3 जा, ठीक है, 3 1 जा, 3 7 जा. So 4 upon 17 is your required probability. 4 upon 7 is your required probability. That is 4 upon, am I right? But student, you check your answers. I don't know the answers. ठीक है, 4 upon 17 is the answer. Now come to the question, D part of this one. D part. D part is both are red cards. You can do, students. Both are red cards. So red cards कितने रहते हैं अपने पास में? For D part is both are red. Both are red. So how many red cards are there? 26 red cards are there. So you can easily do it. 26
C2 which is calculated, and total sample space is 52 C2. Divide these two, you are getting the result that you write yourself. ठीक है. Now E part is one is heart and other is non-heart. Again E is also very easy. One is heart. How many heart are there? Heart. How many? 13. So 13 C1 and अदर इज़ अ नॉन हार्ट. सो वन इज़ अ हार्ट 13 है. तो बच्चे कितने अपने पास में? 52 कार्ड से 52 में से 13 गए तो कितना रहता है अपने पास में? 39. तो बाकी दूसरा कार्ड मैं कहाँ से लूँगी? 39 से. सो वन इज़ हार्ट एंड अदर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नॉन हार्ट. सो इट विल बी सिलेक्टेड इन अ 39 C1 वेज. सो टोटल वेज आर NE is 13 into 39. And again PE is equal to, you can write a statement because I taught you all these things. Again 26 into 51. You solve it and you will get your required result. Because माझ्या फोनचा मेमरी एवढी नाही आहे की एवढ्या वेळपर्यंत त्याच्यामध्ये व्हिडिओ काढू शकते. तर तरी पण आय एम जस्ट ट्राइंग. सो जो सिंपल है वो खुद करो. Now come to the question number. This which question I finished? 7. Now let us start with the 9th one. Because alternate I am taking. 8th आपका homework है. You have to do yourself. Now a bag from a bag containing 10 red, 4 blue and 6 black balls. Total number of balls. Question number 9th. From a bag. Bag मध्ये किती balls आहे? Total number of balls किती आहे bag मध्ये? Total number of balls in a bag are किती आहे? 10 plus 4 plus 6 म्हणजे किती आले? इक्वल टू 20 बॉल्स आलेले आहे. बरोबर ना? 20 बॉल्स आहे. आता त्यांनी काय कंडिशन दिलेली आहे की अ बॉल इज ड्रॉन ॲट रँडम. अ बॉल इज ड्रॉन आहे. सो अ बॉल इज ड्रॉन म्हणजे किती होणार आहे? 20मधून एक बॉल ड्रॉ करायचा आहे. सो विच विल बी द 20 वेज. सो तुमच्याकडे N(S) किती आलेलं आहे? 20 आलेला आहे. ठीक आहे. नाउ रीड द कंडिशन. अ रेड बॉल. कंडिशन है A इज द इवेंट रेड बॉल इज ड्रॉन. नाउ लेट A बी द इवेंट रेड बॉल इज ड्रॉन. हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? फर्स्ट कंडिशन इज दैट रेड बॉल्स आर 10 रेड बॉल आहे आणि एकच बॉल ड्रॉ करायचं. सो फर्स्ट कंडिशन इज अ रेड बॉल कॅन बी ड्रॉ इन अ 10 C1 ways, that is equal to 10. Therefore probability of A is equal to N of A. This is your N of A upon N of S. 10 upon 20 which is equal to 1/2. ठीक है. Now second is B event. Blue or a black. Blue or black. Now how many blue and black are there? Blue and black. Total 10 balls are there. So 10 C1 upon 20 C1. 10 upon 20. So again you will get the 10 C1 and total is this is, therefore N of B is equal to 10, N of S is equal to 20, P of B is equal to 10 upon 20 which is equal to 1/2. ठीक है स्टूडेंट. दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टंट. JEE पॉईंट ऑफ व्ह्यू से हिशोबाने हा चॅप्टर खूप इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून तुमचे हे बेसिक मी का करून घेते. भले हे 12वीमध्ये नाही आहे पण पुढचे आहे बेस थिअरम वगैरे वगैरे. म्हणून हा चॅप्टर मी परत घेतला आहे कारण तुमचं सगळ्यांचं रिव्हिजन झालेलं नव्हतं. बरोबर. हां 10 C1. नाव नॉट अ ब्लॅक बॉल. नॉट अ ब्लॅक बॉल. ब्लॅक बॉल किती आहे माझ्याकडे? 6. सो रिमेनिंग आर 10 plus 4 14. सो थर्ड इवेंट विल बी द 14 C1. Therefore N of C is equal to 14. So P of C is equal to 14 upon 20 which is equal to 7 upon 10. ठीक है. Very simple going on. Now come to the question number 10th. 10th नहीं 11th क्योंकि 10th आप लोग करोगे. 11th पहले लिखिए. 11th sum is given to you that what is the chance that a leap year is selected randomly? What is the chance or that a leap year is selected at random will contain the 53 Sunday? मतलब कि उन्होंने पूछा है कि क्या चांसेस है कि 50 लीप ईयर में 53rd जो आएगा वो संडे हो, 53 जो डे रहेगा 53rd डे
वो 53rd संडे आने के चांसेस है। देखो इन अ ईयर, इन अ वीक, see how many weeks are there? First of all, there are how many days are in leap year? Let's see. A leap year, question number 11th. Leap year has 366 days. 366 day means, let me tell you, 7 366, 7 5s are 35, 1 6, 7 2s are 14, remaining 2. So in a leap year there are how many weeks are there? 52 weeks and plus 2 days extra, plus 2 days. Now tell me students, in a 52 weeks how many Sunday will be there? In a 52 weeks there will be the 52 Sundays. Now we have to find the 53rd Sunday is from these 2 days. बराबर है? ये 52 weeks में, in a 52 weeks there are 52 weeks and 2 days. So in a 52 weeks, in 52 weeks 52 Sundays. So therefore 53rd Sunday is from remaining 2 days. This is the remaining 2 days. So what is the chances, what is the sample space for these 2 days? So sample space will be, these days can be Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday. Now what they are asking you, 53rd Sunday. Now this is the N of S. Now A is the event of having the 53rd Sunday. A is the event of having 3rd Sunday. तो देखो इसमें एक Sunday आ रहा है and one Sunday is here. So that is SUN Sunday and Monday. So how many events are there? N of A is equal to 2. So probability is, therefore probability is equal to N of A upon N of S, which is equal to 2 upon 7. I hope you are understanding. हे माझा पहिलेच प्रयत्न आहे, हळूहळू आपण करूया इम्प्रूव्हमेंट. See, now question number 13th. Now 13th, 11, going to the question number 13th. A room has 3 sockets. ठीक है, रूम में कितने सॉकेट्स है? सॉकेट्स मीन्स जिसमें हम लोग बल्ब लगाते हैं, उसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं. अपन 3 sockets and 3 sockets from a collection of 10 bulbs. Number of sockets are and number of bulbs are, number of sockets are 3 and number of bulbs are, कितना बल्ब बोला है उन्होंने? 10 बोला है. और 10 में कंडीशन क्या दी है? विच आर 6 आर डिफेक्टिव, मीन्स 6 बैड बल्ब है and 4 is good bulb. You can write it in a short form, 6 bad and 4 good bulb है. ठीक है. Now what condition is given to you? At night a person selected 3 bulbs. आता how many selections? You have to select the 3 bulbs. So how many bulbs are there? 10. So N of S, sample space is equal to 10C3. 3 select करना है ना. So 10 into 9 into 8, 3 into 2 into 1. So which is equal to 3 3s are 9, 2 4s are 8, 5 2s are 10, 9 2s are 18, 18 8s are 144. नहीं किती होणार?
बघा ना, 3 2 6 6 6 6 6 12 9 120 बराबर 120 ways. ठीक है. सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज 120. नाउ what condition is given to you? Now ns of is ready, n of s ready. Now come to the question part 1. what is the probability room is still dark? अभी सॉकेट में बल्ब लगाने के बाद भी रूम डार्क है, तो उसने क्या किया होगा? what he has done? he must be taken the bulb from the bad bulbs, because bulb they are not lighting na, so with he has selected the bulb from the 6 bad bulbs. so A is the event. so यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री. so first part is A is the event, room is dark, and complementary means इसका उल्टा, event room is lit, मतलब रूम में उजाला आ गया. So for 3 for room is to be dark, he must be chosen from, room is to be dark, he must be chosen from 6 defective or bad bulb, 6 defective bulb. so that will be the, how many bulbs you have to select? 3 sockets are there na, 6 into 5 into 4, 3 into 2 into 1, which is equal to 20 ways. so probability that room is dark, is equal to Na upon ns. Na कितना है? 20 है. ns कितनी कर लो अपन? ns is 120. so it is 120. 120 means it will be the 1 upon 6. ठीक है, 1 upon 6. now second part, read the second part. the room is lit. अभी रूम में उजाला है, तो रूम में उजाला कब होगा? मेरे पास 4 अच्छे बल्ब है, 1 लगाएंगे तो भी उजाला होने वाला है, 2 लगाएंगे तो भी उजाला होने वाला है, 3 लगाएंगे तो भी उजाला होने वाला है, 4 लगाएंगे तो भी उजाला होने वाला है. तो आइदर यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C3, और टोटल में से, और टोटल मीन्स आई वॉन्ट टू बी रूम टू बी लिट है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूम इज लिट, सो इट कुड बी टोटल में से अंधेरे माइनस कर दिया. टोटल में से अगर मैंने अंधेरा माइनस कर दिया तो उजाला उजाला रहेगा ना. ये देखो मेरे पास में अंधेरा ये है, दिस इज माई डार्क. so you know, all of you, I taught you that in a probability we have total is probability is always lies between 0 to 1. so 1 is the maximum. so 1 is the maximum. 1 में से मैंने 1 upon 6 माइनस कर दिया, तो बचा कितना मेरे पास में? 5 upon 6 is the probability that my room will lit. ठीक है. so this is the question number 13. now come to the question number let me take the 14 also, because 14 is this seems to be the vowels and consonant. let me take that one, then after that I will take 15 and then 17. 3 sums I have to take, then I will wind up. okay, question number 17. Question number 14. Now letters of the word from mother are arranged at random. Find the probability that arrangement vowels are always together. Vowels are always together. First of all we have to find the arrangement.
First of all, we have to find the N of S. There are mother na. How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 letters in word mother, which can be arranged in a. Now we have to arrange it. See, we don't have to select it. Arrange. तो arrange में हम लोग क्या करते हैं? Permutation use करते हैं. That is 6p6. 6p6 means 6 factorial ways. First letter can be arranged in a 6 ways. M can be arranged in 6 ways. चलो M की position locate हो गई. Then O will be arranged in a remaining 5 ways. Then T will be arranged in the remaining 4 ways. So it is said to be the 6p6 ways. So mother can be arranged. There are 6 letters in the word, so it can be. So it can be arranged in. It can be arranged among themselves. In themselves or among themselves. P6 factorial, which is equal to 6 factorial. 6 factorial. Huh? So N of S is equal to. I told you the concept of how it make the 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. क्योंकि M 6 प्लेस में, M की पोजीशन हो गई, फिर बचा हुआ 4 इतने पोजीशन में. So it is total 6 5 is 30, 34 is 120, 120 12 6 is 720. 720 ways. So 720 ways are there. ठीक है. Now event is vowels are always together. Now how many vowels are there? O and E. So first is that O and E are vowels. V-O, vowel spelling V-O-W-E-L-S. O and V are vowels. So what I will do, O और E को मैंने बांध दिया रस्सी से. तो यानी कि जहाँ पे भी मूव होगा एक साथ ही मूव होगा. तो यानी मेरे पास में M O E तो एक ही सेट बन गया, बिकॉज आई टाइड इट MOTHR. ठीक है. नाउ दिस कैन बी अरेंज्ड इन 1 2 3 4 5. सो दिस अरेंजमेंट कैन बी इन 5 फैक्टोरियल वेज. आफ्टर दैट ये जो OE है ये एक साथ थोड़ी चुप बैठेंगे, इसके में भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट रहेगा ना. कभी E आगे तो O पीछे, O आगे तो E पीछे. सो दे विल अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 2 फैक्टोरियल वेज. सो टोटल वेज आर 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. बिकॉज व्हाट द कंडीशन इज गिवन, अगेन लिसन टू मी, O एंड E आर वॉवल्स. तो ओवल से तो हम लोग क्या करते हैं, वो दोनों को एक साथ बांध देते हैं क्योंकि उन्होंने दे आर सेइंग कि दे आर ऑलवेज टुगेदर. अगर एक साथ रखा है तो कितने लेटर्स बन जाते हैं मेरे पास में? 1 2 3 4 5. So it can be arranged in a 5 factorial way. Now OE, these are the 2 letters. They will arrange among themselves in a 2 factorial ways. So 5 into 2 factorial is your event A. So A. So probability of A event is equal to N of A upon N of S. N of A means 5 factorial into 2 factorial upon 6 फैक्टोरियल. शैल आई राइट द 6 फैक्टोरियल? 720 लिखने से अच्छा ना 6 फैक्टोरियल लिख लेते हैं ताकि कट करने में. 5 इंटू कीप इट 5 फैक्टोरियल एज इट इज़. 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल. यू नो ऑल ऑफ यू परम्यूटेशन चैप्टर. 5 फैक्टोरियल गेट कैंसिल. सो व्हाट? 2 upon 6 which is equal to 1 upon 3. 1 upon 3 is the answer. You check in your text answer book. 1 upon 3. ठीक है. So now come to the question number B part of this one. B part is vowels are never together. Vowels are never together. तो क्या करेंगे इसमें हम लोग? कभी भी पहले वाले की अपोजिट कंडीशन फॉर्म हो गए ना तो 1 में से उसको माइनस कर देना, बिकॉज उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया ना. ये दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. कि फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दे आर ऑलवेज टुगेदर एंड इन सेकेंड क्वेश्चन दे आर सेइंग दे आर ऑलवेज दे आर नेवर टुगेदर. सो बी इज द इवेंट. बी द इवेंट that vowels are never together.
never together. So never together means B is a complementary of A. So probability of B is equal to 1 minus P of A. 1 minus probability of A कितना निकाला था हम लोगों ने? 1/3. Students, please after watching this video response me. This is my first video. So probability of B is this one 2 3. ठीक है. अभी O is the beginning and O is at the beginning and end with the T. अभी थर्ड पार्ट क्या बोला है उन्होंने कि स्टार्टिंग में थर्ड पार्ट स्टार्टिंग में O होना चाहिए और लास्ट में T होना चाहिए. बराबर. C is the event. First let me write the event. C is the event. C is the event. O is in the beginning and T is at the end. T is at the end. ठीक है. सो O यहाँ पे आ गया और T यहाँ पे आ गया. बीच के बचे हुए लेटर्स क्या है अपने पास में? द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर फिक्स. द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर इज फिक्स. ठीक है. सो बीच में M O T H E नहीं T is gone ना. T is there only. I thought this is M H E R. So how many letters are there in the center? बीच में कितना है? 1 2 3 4. So the remaining 4 letters can be, so O and T is fixed. O and T are fixed. They can be arranged in a one way only. Fixed. And remaining 4 letters can be arranged in 4 factorial ways. That is 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. So n of C event is 24. So probability of C is सैम्पल स्पेस कितना था? 720 ना. 720 24 3 जा 720. सो इट इज़ 1/30 बेस. ठीक है. नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस वन इज द इवेंट दैट अरेंजमेंट स्टार्ट्स विद द वोवल एंड एंड विद द कंसोनेंट. नाउ डी इज अरेंजमेंट स्टार्ट विद द वोवल. अरेंजमेंट स्टार्ट विद द वोवल स्टार्ट विथ vowel and end with consonant. Now vowel is O and E. It could be starting. Consonant is M H T R. ठीक है. So vowel is start with the फर्स्ट पोजिशन. स्टार्टिंग विद द स्टार्ट कैन बी स्टार्ट कितने तरह से हो सकता है? 2 में से एक ही आएगा. सो इट कैन बी स्टार्ट इन अ फर्स्ट लेटर कैन बी अरेंज इन 2 है ना. 2 में से मुझे एक ही सेलेक्ट करना है. इन 2C1 वेज. That is equal to 2 ways. ठीक है. And last letter can be arranged in a 4 ways ना. 4C1 ways. That is 4 ways. बराबर है. So फर्स्ट और लास्ट लेटर की पोजीशन फिक्स हो गई. अभी
मेरे लेटर्स कितने हैं, मदर में कितने शब्द, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन अ मदर, MOTHER, 6 letters are there. I have make the fixed position for the first and the last. Now how many remainings are there? Again there are the 4 remainings. So remaining 4 letters can be, now the remaining फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन फिक्स हो गया. देखो उन्होंने क्या बोला है, पहला जो वॉवल से होना चाहिए, तो वॉवल मेरे पास 2 थे, तो 2 में से एक, सो इट कैन बी अरेंज इन अ 2C1. बचे कितने, THRM, सो 4 लेटर्स विच आर कंसोनेंट. तो उसमें से मुझे एक लेटर वहाँ पे देना है, तो उसको 4 वेज में सेलेक्ट किया. तो बचे मेरे पास में बीच में, आई हैव व्हाट, हाउ मेनी लेटर्स वी आर रिमेनिंग विद द 4 लेटर्स, तो 4 मधी आहे लेटर्स. तर त्याला आपण काय करणार आहे, सो रिमेनिंग द रिमेनिंग 4 letters can be arranged in